चलते हैं आगे। अच्छा, एनी अपडेट ऑन, एनीवन हैज एनी अपडेट ऑन पीयूषा? अन्या, डू यू हैव एनी अपडेट? कल नीचे थी, शी वॉज अनवेल, उसको बहुत डर वर हो गया, उसको अपेंडिसाइटिस है करके। ऑन पीयूषा, और ये क्या बालों का नया स्टाइल बनाया है क्या, नोबिता जैसा? You have you clipped your hair or have you cut your hair, trimmed your hair? थोड़ा सा Trim. हेयर कट मेल फंक्शन, ऐसा क्या? वो क्या कोई, हाँ तेरे नाम का सलमान खान हो गया है पूरा, बीच में ऐसे लेके इंटॉक्सिकेटेड बार्बर के साथ हेयर कट हुआ है क्या? चलो, सो वी टुडे स्पीड को हमने बाय बाय दे दिया है, और आज से थोड़ा सा स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। वी गोना स्टार्ट वंस अगेन एंड वी स्टार्ट विथ वेलोसिटी। यहां से आपकी चैप्टर और आगे बढ़ती है। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग वेलोसिटी, one of there will be 5 parameters you will be understanding in chapter. S आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, this S is known as displacement, ठीक है? displacement is shortest straight line distance, और इसका SI यूनिट होता है मीटर, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जान के रखिए, इससे आगे आगे होता जाएगा। नाउ वेलोसिटी, ठीक है? स्पीड वी नो, स्पीड इज डिस्टेंस। ओके, हाउ टू अंडरस्टैंड? लेट्स से देयर आर 2 पॉइंट्स हियर, ऐसे 2 पॉइंट है, हम यहां से ये पॉइंट ऐसे गए, ठीक है? दिस इज वन रूट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, एंड यू कवर्ड समथिंग अराउंड से x किलोमीटर यहां पे कवर किया, ठीक है? एंड द टाइम टेकन वाज से दिस टाइम वाज t1 एंड दिस टाइम इज t2। देन स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते थे? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड x से मीटर, ओके, x मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, सो द टाइम टेकन विल बी t2 माइनस t1। इतना समझ में आया आपको? ठीक है? ये होता था स्पीड, एंड देन देयर वाज एवरेज स्पीड व्हिच इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ये स्पीड है। नाउ वी विल बी concentrating on the next parameter which is velocity. When we come to velocity, this parameter is no more there, distance is not allowed, you will be having only displacement. New marker, Faber-Castell, okay? So displacement means this is now what is known as our S, displacement, shortest straight line distance divided by time taken। तो velocity हमारा क्या हो जाएगा? velocity लिखने से पहले समझिए, velocity is denoted by v, and v will be equal to displacement, okay, over time or time taken। Have you understood? Displacement over time taken. In clear language, v can be written as s upon t। s के साथ कंफ्यूज मत होइए, पहले कंफ्यूजन होगा, you will feel s is speed. No, s is not speed, s is displacement. s is in meters and t is in seconds, so the unit for v is meters per second। Have you understood this or not? Now इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही है, देखो तो, here also the unit is meter divided by second, don't you think? So unit is meter per second. Now we need to understand what is the difference between these two. First of all, इसका डैडी कौन है? डैडी है वेक्टर, so velocity is a vector quantity, whereas speed, if you see, is a scalar quantity। speed is a scalar quantity। ये कुछ differences देखते हैं, ठीक है? difference between speed versus velocity। let's see the difference। number one, speed is given as the ratio of distance over time, whereas velocity is given as the ratio of displacement over time। have you understood? That's the first difference। second, speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity। speed is a scalar quantity, velocity is a vector quantity, ठीक है? अगर ये स्केलर है, that means in speed मैग्नीट्यूड बोलना ही सफिशिएंट है, मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू से स्पीड इज 25 मीटर्स पर सेकेंड, सफिशिएंट। इसमें लेकिन हमें मैग भी देना पड़ेगा और डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, कैसे फिर बात करेंगे? इट विल बी 25 मीटर्स पर सेकेंड
से ईस्ट। समझ में आया? अब एक बात देखते हैं, और जैसे ये एक आदमी है, and this man can go this side with 5 meters per second, can also go this side with 5 meter per second. अगर आप स्पीड के बारे में बात करेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है वो किस साइड जा रहा है, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्पीड डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन, ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी में डायरेक्शन इज मैंडेटरी. देयरफॉर वी विल राइट अनदर थिंग दैट स्पीड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. देयरफॉर लीनियर इक्वेशन में आप करते थे ना, स्पीड नेगेटिव आने से आप बोलते रिजेक्टिंग. व्हेन यू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल सी speed is always a positive quantity, whereas if you look at velocity, velocity as a quantity can be positive, can be negative, can also be zero. Speed also can be zero, zero आ सकता है. Speed can be zero, velocity can be positive, can be negative. If a person is going this side, we will say he is traveling 5 meters west, and if we are mathematically taking this as positive, we'll take this as negative. Negative velocity does not mean the person is going slow. It just means the person is going in the opposite direction, or the body is traveling in the opposite direction. इतना चीज समझ में आया? ठीक है, ये स्पीड और इसमें फर्क है. अब जरा वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं. कैन आई से वेलोसिटी को मैं ऐसे लिखता हूं, वेलोसिटी इज स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन. देखो तो ऐसा बोल सकता हूं ना. When you were defining speed, you did not bring the necessary clause of direction, but if you bring the necessary clause of direction in speed, you are actually talking about velocity. Velocity एक special speed है जहां direction है. जैसे for example यहां पे देखो, this is speed, distance. If you travel this way, यहां पे velocity नहीं हो सकता है. Velocity हमेशा displacement के साथ होता है. Have you understood? Just like we learned something called distance can never be negative. Displacement can be negative. Distance covered cannot be zero. Displacement can be zero. I go from here to Vijayawada and come back from Vijayawada to here. Displacement is zero. Distance is how much? 200 kilometer, 200 kilometer, 400 kilometer. ये एक और डिफरेंस है. तो ये चीज समझ में आया आपको? And speed in a specified direction. For example, एक और एग्जाम्पल देखो. Say suppose these you will study later in projectiles and all. जैसे ऐसे बॉल है, आपने बॉल को किक किया तो बॉल कैसा जाता है? बॉल ऐसे जाता है. अब बात आता है, सर आई कैन किक द बॉल विथ सम वेलोसिटी, विथ सम स्पीड. ऑब्वियसली, बट दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन फिजिक्स. फिजिक्स में हम वेलोसिटी की बात करते हैं. जब बॉल को हमने यहाँ पे किक किया, वेलोसिटी इज दिस. जब हमने यहाँ पे किक किया, वेलोसिटी इज लाइक दिस, लाइक दिस. हियर वेलोसिटी, एवरीवेयर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. Although the ball might travel with the same speed, but the direction is changing, and if direction changes, velocity changes. We'll come back to the circular motion में हम इसको भी पढ़ेंगे. If a body travels with the same speed, is it possible that it is traveling with the same velocity? No, need not be. उसका example देखेंगे अभी. इतना चीज समझ में आया? Have you understood? Any question you can ask. If your question is to a future content, I'll hold it. Speed is all about scalar, and we are not going to study speed anymore. We are going to study about velocity. That means whatever you study from now, if you are going to study only velocity, one thing becomes clear, that whatever we are going to study will never be distance, they all will be displacement. Otherwise velocity हो ही नहीं सकता है. तो चैप्टर के नाम को फिर से चेंज करते हैं. चैप्टर कैसा था हमारा? मोशन. अब इस चैप्टर को थोड़ा चेंज करते हैं. इट इज मोशन इन अ straight line. This is what you learn in class 9. You cannot learn this motion. You are learning only this motion. Billiard का ball वाला motion, carom के coins वाला motion, ठक ठुक. Yes, a body may go from here to here. A body may go like this, like this, like this, like this, like this. But each of the motion will be straight line. आपको यहाँ ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा. A cannon is fired, a missile is, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये नहीं आएगा. ये हमें 11 में आएगा जाके. This is one dimensional motion and that too straight line. Have you understood? अभी थोड़ा सा डेप्थ में देते हैं तो आपको मोशन पार्ट क्लियर होगा अभी. Okay, I'll not rub the table. If you have any doubt, you can always ask.
Let's see one more thing. Okay. These are all motion in a straight line. Whatever we are going to study from now will be motion in a straight line. We will further amend the name of the chapter. Name of the chapter is only motion. अभी हमने इसको ठीक किया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इस चैप्टर में कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि गाड़ी ऐसे गया, somebody moved in a curve, ये नहीं सुनाई देगा, सुन ही नहीं सकते हैं. Whatever you listen is all straight line. And there might be something they may say the distance between two stations is 380. Please understand they are talking about the displacement. Those stations are also straight line stations. That means थोड़ा सा काल्पनिक हो जाता है चैप्टर. ऐसा हो सकता है क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं, पर अभी ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग. So if in the chapter, if you later on find that they say the distance between 2 points is 350, then don't start arguing with me, sir you said that we will never study distance. They are all meaning displacement. Straight line है, ठीक है. In this chapter, if you ever get 2 points and they specify the distance, please understand this is the shortest distance. Displacement की बात हो रही है. तो यहाँ 5 हीरो हीरोइन है इस चैप्टर में. There are 5 hero heroines. Out of the 5 hero heroines, number 1 is S. S is known as displacement. ठीक है. इसके बाद 5 नंबर हीरो है T. T is known as time. बाकी का जब भी खाली है, इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है. नाउ we understood something called rest and we also understood something called motion. Itna, can I go ahead or should I wait for someone? I can go ahead, I can rub this. Chalo. So let's understand the other persons who will be coming in this chapter, the other characters, and then chapter becomes interesting and a lot of numericals will flow down. Okay, now we have understood the concept of something called rest and something called motion. Okay, let's say this is the portion where the body is at rest and this is the point. Let's say this point is A and let's say this point is B. और A के बाद कभी भी body motion में है, A में rest में है. At A the body is at rest. After that, and obviously this will be straight line. We have already discussed this, right? After A, body starts getting into motion. What is your observation on the velocity at A? How much should the velocity be? It is at rest. 0. तो वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है. समझ में आया? ऐसे केस में और यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? Some velocity, we don't know. Some velocity will be there, and body is going towards right side. We have taken it positive for simplicity. So some velocity will be there. If you are trying to do your study between these 2 points, say we are trying to do our study between these 2 points. We want to study the motion of the body between these 2 points. Body यहाँ से यहाँ जा रहा था, हम बीच में एक जगह तक analyze करेंगे. It's just like analyzing a cake half cooked. Cake gets cooked here, but we are testing the cake out here. So body traveled from where? Here to here. In the language of displacement, ये मेरा initial point बन जाएगा. Agree करते हो कि नहीं? ये क्या बन जाएगा? ये मेरा final point बन जाएगा. Sir, you said final is this. No, no. For my analysis, this is the final point. Have we understood? The velocity here will be known as initial velocity. ठीक है? And the velocity here will be known as final velocity. And you obviously said that there will be a difference. Right now, in our case, initial velocity is 0. Final velocity would be some value. We don't know what it is. Have you understood? So in this chapter, whenever you talk about velocity, velocity doesn't come alone. It brings 2 cousins along with it. One will be known as initial velocity. Right at the start, एक और का नाम होगा final velocity. Initial point पे जो velocity है वो और final velocity. This is denoted in physics by U and this is denoted as V. तो आपका second hero इस picture में है U. Initial velocity.
and third hero is V, final velocity. बहुत कुछ पढ़ लिया. What did we start our discussion with? Sir, we started our discussion with velocity. What is velocity? The ratio of displacement over time taken. So velocity's unit is meter per second. However, being a vector quantity, direction matters, right? So velocity has to be specified both in terms of magnitude as well in terms of direction. Velocity can be positive as well as negative based on the reference how you are talking. Speed did not have these criteria. Speed always is positive. गाड़ी के स्पीडोमीटर में कभी माइनस कुछ देखो क्या? नहीं है. A car always goes by the speed, not by velocity. ठीक है? Then also we understood as displacement can be positive, negative, zero, distance can be only zero and positive. Velocity also can be positive, negative, zero, whereas speed can only be positive and zero. Speed cannot be negative. When you start analyzing and discussing about this chapter, about the motion of any body, the motion is always along a straight line path. So we rename the chapter's name from motion to motion in a straight line. And when the motion is going in a straight line, wherever you start from analyzing your motion from, it is called initial point. You could analyze this part also. Then this part will be known as initial, this part will be known as final. Okay, or we could have analyzed this part also. Then this is initial, this is final. The velocity at the initial point is known as initial velocity, and that will be denoted throughout the chapter as u, and the velocity at the final part is known as final velocity, will be denoted by v. Have we understood? Now come to the next discussion. After this, okay, isko mita raha hu. The next discussion is talking about यूनिफॉर्म वेलोसिटी. याद करने की जरूरत नहीं, आप समझते जाओ, आपको ऑटोमेटिक याद होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? सर, दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज ऑलवेज यूनिफॉर्म. इन अनदर वे यू शुड से दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज ऑलवेज कांस्टेंट. गाड़ी कैसे जा रहा है? या गाड़ी कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. उस बीच में ये नहीं हो सकता है. एकदम एक जगह पे कांटा रुक जाएगा. तो डिफरेंस क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब है, इफ वी टेक डाउन सम पॉइंट्स, वी विल से वेलोसिटी cannot change during the course. Cannot change. Velocity cannot change. Now when we say cannot change, then the first thing that comes to our mind is the magnitude cannot change. Magnitude has to be constant. अब से मैं constant को k लिखूंगा. हाँ, start getting mathematics. Constant is always k. K means constant. Magnitude is constant. So for example, if our car is going at 60 km per hour, then 60 km per hour पे constant हो गया. Cruise लगा दिया हमने गाड़ी पे. Velocity cannot change. ठीक है? Velocity के दो परिचय हैं. Being a vector, our velocity is what? Our velocity is a vector quantity. So it has got two identity. One identity being magnitude. Cannot change means आपने इसको constant कर दिया. दूसरा है direction also cannot change. That means if you are putting a cruise control on your car and you are traveling on ORR, is it uniform speed or uniform velocity? Uniform speed. Because जैसे ही आप राजेंद्र नगर आगे टीएसपीए टोल जा रहे हैं, आपने जहां स्टीयरिंग घुमा दिया, डायरेक्शन घूम गया, डायरेक्शन चेंज हो गया. Did you understand? डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसलिए ये बच्चा उठ के बोल रहा था यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस इन अ स्ट्रेट लाइन. द मोशन हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन. Just imagine, I started on ORR and now I find the road free. I have now set my car at 60 km per hour. My car is going at 60 km per hour. Uniform speed? Yes. Now I question myself, are you on uniform velocity? Then I should say velocity, vector. Speed भी uniform होना पड़ेगा, direction भी uniform होना पड़ेगा. But चलाते चलाते suddenly the ORR is turning. अब मैं सीधा जाके थोड़ी गिर जाऊंगा खाई में. I also turned my steering, gone. So we can see like this. Say I started from say PVL city, up to some point I got a straight line and I was on cruise at X km per hour. Uniform speed, uniform velocity. Have you understood? From here, the road suddenly started changing
and then from this point to this point, again we found that the road is absolutely straight. Again on this stretch, if I cruise, it will be uniform velocity. But from here to here, it won't be uniform velocity. Why? कर दी ना बेवकूफों वाली आंसर। यहां से यहां जाने के लिए तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता है। This is physics. When you're considering from here to here, what is velocity? Displacement by time. As the crow flies, not you. Your, let's say from A to B, let's say C, D. We can say on the stretch AB, we had uniform velocity. On the stretch CD, we had uniform velocity. Do you agree? But if I compare on the stretch AD, you straight away said, sir, velocity is not uniform. I asked you why. You said, sir, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ ना। हमने बोला बुड़बक, यहाँ से यहाँ तक के लिए तो सबसे पहले ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। कौवा कैसे जाएगा? A crow will never go like this. crow तो ऐसे जाएगा सीधा। कैरम के स्ट्राइकर ने यहां हिट किया एंड देन कॉइन केम हियर। Between this and this, this is the displacement. Between this and this is the, but when you say between this and this is distance. This is displacement. Shortest, shortest, shortest. Understood? All the problems that we will get, our problems will be between any two observed point where the distance is a straight line. Means in this chapter, everything is a displacement. Hence from now, clear? Whatever they say, the distance between two stations, that means it's a displacement. घुमा फिरा के नहीं है. Because we'll learn a lot of equations now. Those equations are not valid. Those equations are valid only when the motion is a straight line. So chapter के नाम को motion मत बोलिए. Chapter का नाम है motion in a straight line. उसको और ठीक करेंगे. Now time to define uniform velocity. So we say a body is set to travel. पहले सुनो, पहले ही मत लिखो, ये शुरू हो गया CBSE बच्चा. बट सुन पहले. A body is set to travel with uniform velocity if it, two conditions, if it travels in a straight line and covers equal distances. Sir, why are you saying distance? You said displacement. Array, I have first said if it travels in a straight line. If your body travels in a straight line, then all these will also be displacement only, na? Then I can call it distance also. And this distance is displacement. Are you understanding? A body is set to travel in uniform velocity if it travels in straight line, point number one, and covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the time intervals are. अब खुद लिखो. अच्छा, अब एक सवाल आता है, उस दिन आरव ने पूछा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन का क्राइटेरिया नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन. हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म मोशन में कोई फर्क नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं, हमारे अंदर दम है. मोटरसाइकिल जो रेस में चलाता है वो स्लो करता है क्या टर्निंग के टाइम पे? वो आपका मन का वहम है, थियोरेटिकली नहीं. भाई आप एक चीज बोलो ना, आप पेबल सिटी में साइकिल चलाते हो, छोटा सा टर्न रहता है तो क्या आप पेडलिंग करना छोड़ देते हो क्या? ज्यादा टर्न रहता है तो आपके अंदर डर पैदा हो जाता है, आप कोस्टिंग करते हो. डायरेक्शन चेंज डज नॉट मीन लाइक दिस. थोड़ा भी चेंज किया तो भी तो डायरेक्शन चेंज है, क्यों स्लो करोगे आप? हाँ बोलो बेटे. सर्कुलर का बात अभी नहीं करेंगे, सर्कुलर बात बाद में. पहले ये पूरा क्लियर होगा, फिर सर्कल का जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर आप खुद ही दोगे. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे आप लिख रहे हो. आर यू क्रॉस क्वेश्चन योरसेल्फ बिफोर वी गो अहेड. इवन Anya and Yashvi, do you understand distance by now? If somebody asks you what is distance, don't try saying distance is scalar. You say distance is the length of the actual path traveled between 2 points. How you went, I am least bothered. Length of the actual path traveled. Displacement is unique. There is only one shortest straight line path between 2 points. Between me and Kritik, there is only one shortest straight line. Distance बहुत हो सकते हैं, ऐसे आ सकते हो. We may go to some city and come back to him. Got it?
Then, do you understand the difference between speed and velocity? Speed is distance upon time. Your car measures speed because you don't go straight with your car, you go ada teda. So, whatever you are traveling is distance. So, the car measures distance by time. Do you understand what is velocity? Does the car measure velocity? No. No. Yes, it does measure velocity. If you are traveling on a straight track from A to B, at that time, whatever speed you are measuring is actually velocity. Because velocity is also known as speed in a defined direction. If you are going in a defined direction, then speed and velocity are same. Defined direction, straight line. Straight line में आप आड़ा तेरा नहीं जा सकते हो ना. Their speed is all. Tell me, okay. Tell me one thing. Can you tell me this? This is a straight line between A and B. It is 5 meters. Time taken to travel is 1 second. Calculate speed and velocity. क्या हो गया? कितना टाइम लग रहा है इसको कैलकुलेट करने में? What is the speed? What is the velocity? 500 per second towards Towards D. But both have same value. So speed and, as long as this is सीधा, speed and velocity is सीधा. ये क्या है? 5 meter. An ant travels along a semicircular path. Calculate speed and velocity. कैलकुलेट करके दिखाओ. कौन दिखाएगा? कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी. समझ में आएगा ना? कैलकुलेट करके दिखाओ. What is speed and what is velocity? You want some calculations? I can help you with the calculator. Time is 1 second. Calculate speed and calculate velocity. Velocity तो you have already calculated. How much? 5 meter per second. What is speed? Sir, for the straight, for semicircle. Why are you asking that question? What happens, Siddharth? क्यों फंस रहे हो? Put your knowledge. It's not about who does it first. I never evaluate that. Then 1 second. Calculate speed. For a journey between A and B, calculate speed and velocity. You can give in fractions also. I don't know. distance. So speed to up the side of the ant is 55 minus 7 meters per second. कैसे निकाला? Sir, the circumference of half circle. Circumference of half circle. Circumference कितना होता है? 2 pi r. तो इसका मतलब what is circumference? अभी तुम r पे जाओगे. देखो कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो. r वार जरूरत नहीं है. What is circumference formula? 2 pi r नहीं, pi d. क्यों r कर रहे हो? d दिया है ना? So go as pi d. Pi d. I am not asking calculation. Your circumference is how much? Pi d. So semi circumference is pi d by 2. Yes. Which is nothing but pi r. Yes, sir. Whatever it is, pi d by 2, or you take it as pi into 5 divided by 2. This is the distance divided by time 1 plus 5 pi by 2 is the speed. Competitive exam. छोटा सवाल. Distance over time. Distance is how much? Pi d is circumference. So pi d by 2 is what? Semi circumference. So pi d by 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 pi by 2. हाँ, 5 pi by 2. 55 बोला था. क्या कौन सा फ्रैक्शन करने से 55 होता है? We are not worried about calculation here. Here the only trick is the child able to understand that the semi circumference will be used. If the child is able to understand that, that is the learning skill that we are trying to evaluate. गोली मारो उस आंसर को. किसी को कोई मतलब नहीं है आंसर से. Did you crack that this problem uses semi circumference? If you have cracked that, problem is solved. Rest, if I give you a calculator, you will give me more accurate answer. चलो ये चीज समझ में आया. Okay. So uniform velocity, a body is said to travel in uniform velocity
if it travels in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time or equal displacements in equal intervals of time, no matter how small the displacements are. And again, if you try to plot uniform velocity, if you try to plot uniform velocity as how, as on a st curve, st means, s means what, displacement, and t means time. So you will again get a straight line. Straight line आएगा. This is called a straight line. हाँ, एक दिन सिखाया था. In physics, this is called straight line. Straight line, sleeping line, vertical line. And if you see like this, that is called a curve. Straight line का मतलब ये नहीं कि ऐसा. उसको हम कहते हैं sleeping line. ठीक है? Clear? Non-uniform velocity. A body is said to be non-uniform velocity if it travels in a straight line and does not cover equal intervals in equal distance displacement in equal interval times, or if it covers equal displacement in equal intervals of time but the directions is not there. इसलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कोई पूछता नहीं है. एंड द कर्व कैन नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन. इतना समझ में आया? दिस चैप्टर व्हेन वी रिवाइज सेकंड टाइम, लॉट ऑफ न्यू थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग्स विल गेट क्लियर. और जिसका ये क्लियर है वही 11 में थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 11 इज जस्ट time pass. From second chapter you will be able to go ahead only if your this part is clear, otherwise वहीं फंस जाओगे. ठीक है? Now fourth person has to enter. Fourth person is known as acceleration. यहां पे भी बहुत thought process है. Acceleration. ठीक है? Acceleration as a quantity in physics, acceleration is said as the difference in velocity over time. Difference in velocity over time. समझते हैं पहले इस चीज को. कैसे लिखें? Let's say a body is traveling in a straight line from A to B, right? And obviously at A the velocity will be known as u, initial velocity, and the velocity here is v, which is final velocity. Are you able to understand these diagrams or not? At A the velocity is u, initial velocity. At B the velocity is v, which is final velocity. बहुत tough है यहाँ से. Time taken, time here is t1 and the time clocked here is t2. So difference in velocity, difference in any difference. What is the difference in your marks? Your final marks minus your half yearly marks. Difference हमेशा होता है final minus initial. So we will say final velocity minus initial velocity, okay, over t2 minus t1, which is nothing but v minus u by t2 minus t1. ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? There is a Greek word called delta. Delta is represented in capital like this and in small letters like this. We will be using this. Delta is the word we use for denoting any difference. किसी भी चीज का difference denote करने के लिए delta. इसलिए sometimes people say, okay, how much is the delta? How much is the difference in price? So acceleration as a quantity is said to be the difference in velocity over the difference in time. Delta v by delta t. Welcome to minor calculus. Delta v by delta t. The difference in velocity over your age and my age. Delta age is the difference between my age and your age. Did you understand? Delta is distance. Delta stands for difference in physics. The difference in temperature between two bodies, we'll call it delta T, delta Q. Anything delta means difference. The difference in the study hours put by you and me is some delta H. Sir, but then okay, so wait. Delta means something, anything difference in physics is used, the word we use is delta. What is delta P? The price difference. In economics, you'll study price difference as delta P. Delta means difference. Otherwise, you will be writing big formulas. Final minus initial. So difference in velocity means delta V, and difference in time, the time that you took difference. अब ऐसे लैंग्वेज में अगर आपको कोई बोले, can you define velocity? I said velocity is what? Difference in displacement. Just see, let's say this is my origin A and B. From here to here displacement is S2.
From here to here, displacement is S1. I want to study between A and B. Between A and B, what is the displacement? S2 minus S1. तो यहां पे velocity check करना है. And time clocked here was T2, here is T1. So I'll write it as S2 minus S1 divided by T2 minus T1. So velocity can be said as delta S over delta T. This is nothing but rate of change of displacement. Rate. आप पढ़ते थे ना PRT, ये rate है. Rate. At what rate is the velocity changing? Sir, okay, what is speed? Speed is rate of change of distance. You just cross question the speedometer. 30 किलोमीटर per hour, मतलब प्रति hour 30 किलोमीटर. Every hour you are covering 30 kilometers. So what is displaced? What is velocity? Rate of change. What is speed? Rate of change of distance. Rate. You have a helping hand, a maid. What is her rate? 2000 rupees per month. हर एक महीने पे 2,000 रुपए देने पड़ेंगे. What is rate of change of distance? Sir, 30 kilometers per hour. प्रति घंटा 30 किलोमीटर क्रॉस कर रहा है. अब एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, ये बहुत बेसिक है, अभी और मजा लेंगे इसका. एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज. थोड़ा समझना मुश्किल है, अभी डायग्राम जब तक नहीं बनाऊंगा समझ में नहीं आएगा. वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज नहीं, पहले उसको समझो. द एक्सीलर आएंगे. अब इतना पहले लिख लिया. हैव यू रिटन दिस मच? चलो और थोड़ा रेट के कॉन्सेप्ट से समझते हैं इन स्टोरीज को. लेट्स अंडरस्टैंड देम बाय रेट कॉन्सेप्ट. देन ओनली यू कैन गो इनटू प्रॉब्लम्स, अदरवाइज यू विल मग अप, और वो मैं नहीं चाहता हूं. ठीक है, आ जाओ. नाउ लेट्स सी द रेट पर्सपेक्टिव, एंड दिस विल बी after this you will see from this angle only, the rate perspective. How do you see it from rate? Okay, let's say we have employed a maid and she charges 3,500 per month. Now cross question yourself in your mother tongue. What do you understand? 3,500 रुपए प्रति महीना. 3,500 per month. What is her rate? 3,500 per month. Every month you have to pay how much? 3,500. We deposited some money in bank and bank is giving us 10% per annum. What is the rate? 10% per annum. Every year 10% it will give. Now let's put the same thing. We have a speed in our car and the speed is clocked as 60 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that at 8 o'clock if you start the car and if you have started at 8 o'clock, at 9 o'clock you must have traveled 60 किलोमीटर. यही तो बात कह रहा है. समझ में आया? Every hour 60 kilometers will travel. At 10 o'clock we will be at 120 kilometers from here. Have you understood? अब एक्सीलरेशन देखो. एक्सीलरेशन मजेदार चीज है, उसको समझने में सबकी फट्टू हालत होती है. आओ, इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हो. लेट्स से राइट, आवर फर्स्ट ड्राइंग. लेट्स से first we are going to say what is velocity. Velocity is rate of change of displacement. Obviously we are considering a straight path from A to B. Velocity is rate of change of displacement. Velocity is written as delta S over delta T. For every delta T time, sir, why didn't you write it as only T? No, difference in time. For every difference in time interval, how much is the displacement changing? Did you understand? फिर बोल रहा हूँ. For every, let's say we tell our velocity as 2 meter per second. So what is our delta t? Our delta t is 1 second. For every 1 second difference, what is our velocity? Understood?
ठीक है, अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, जिससे ए टू बी, राइट, यहां से लेते हैं तो आपको समझ में आएगा. Wherever you get stuck up, you let me know. A to B. We are starting our thing at 080000. Do you understand this time? 8:00 पहला पॉइंट हम आए. दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1. टाइम इज 080001. हाउ मच इज द टाइम इंटरवल फ्रॉम हियर टू हियर? डेल्टा टी इज इक्वल टू हाउ मच? 1 सेकेंड. अगर हम इस स्पीड से जा रहे हैं, वेलोसिटी से, आई में से स्पीड ऑल्सो, डोंट वरी, वी आर इन स्ट्रेट लाइन, हमें कितना डिस्टेंस कवर कर लेना चाहिए? ये धीरे क्यों बोल रहे हो? Why are others not answering? What is so difficult here, children? 2 meters. If you don't answer, then you will not understand physics. It's not about listening to Rip Van Winkle story. इसमें समझने में क्या है? इतना देर रेट बोल के सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं. 1 सेकंड में ये गाड़ी कितना जाएगा? 2 meters. So from here to here, I would say this is 2 meters. This is my first observation point. 2 meters, right? I take my second observation out here. Time is 080002. What is the distance now from here to here? How much distance should the body cover? 2 meters. And so here the marker will be at 4 meters. Have you understood? What is the rate of change of displacement? The rate of change of displacement, and it is constant, 2 meters per second. लेकिन अगर यहां से नेक्स्ट स्ट्रेच में मैं बोल दूं कि मेरा वेलोसिटी चेंज हो गया. Now, right now what we are seeing uniform velocity, equal distances in equal intervals of time. I now suddenly change my velocity. From here I say from second post, my delta v by delta t now becomes equal to 3 meter per second. My next observation point is here, where the time is 080003. What should be the marker here and how much should be this? बोलो. यहाँ पे 7 मीटर आएगा. समझ में आ रहा है? ये रेट चेंज हो गया ना यहाँ से. पहले हम जिस मेड को रखते थे वो 1 दिन का 2 रुपया लेता था. महीने के पहला तारीख में काम करने के बाद 2 रुपया दिया, दूसरे तारीख में भी 2 रुपया दिया, दूसरे तारीख में उसने नखरा शुरू किया. अब मेरे को देवा 3 रुपए चाहिए दिन का. तो तीसरा दिन जब खत्म हुआ तो 3 रुपया देना पड़ेगा. जेब से कितने रुपए खर्च हो गए? 7 रुपए खर्च हो गए. बजट किया था 6 रुपए का, क्योंकि हमने सोचा था हमारी मेड यूनिफॉर्म रेट में काम करेगी, पर उसने यूनिफॉर्म रेट में काम नहीं किया. बात समझ में आ रहा है? यहां मेड ने रेट बढ़ा दिया तो खर्चा ज्यादा हो गया. अगर मेड में दया आ जाती, साहब जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपसे ना पैसे कम लेना चाहिए, मैं यहां से आपके लिए मेरा वेलोसिटी होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. बताओ अगला टाइम ऑब्जर्वेशन, सॉरी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी. अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है 080004. क्या होना चाहिए मार्कर यहाँ पे? 8. और यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 1 मीटर. अब नाउ स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम A to this point. Is it uniform velocity? No. You are not covering equal distances in equal interval. Time distances are separate, time are separate. समझ में आया? यहाँ पे मेड ने दया किया आपके ऊपर, खर्चे कम हुए. अंडरस्टूड? इस पूरे स्टोरी में वेलोसिटी चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. When velocity changes with respect to time, a new person is born. Acceleration. ये ड्राइंग समझ में आया? अच्छा, अभी जरा देखो तो. Let's say velocity was said as delta s over delta t. If I tell you delta s is 0, then what is velocity? Velocity is 0. Can you explain me this scenario? टाइम लेकिन 0 नहीं है. टोल ब्रिज सामने लाइन लगा हुआ है. जब आए 5 बजा,
आगे गए, अभी भी 5 ही बजा हुआ है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी? 0. टाइम elapsed 25 minutes. Time elapsed is 25 minutes. Velocity 0, because displacement has been 0. Vehicle is not moving. Can we see that as a plot over a displacement time graph? Let's say 8 o'clock, 8:30, 9 o'clock, 9:30. Right? You started with say uniform velocity. ऐसे गए हम लोग, 8 बजे टोल नाका पहुंच गए. This is displacement and this is time. 8 o'clock you reach toll and toll bridge आ गया, मतलब you covered this much distance. How much? Say some 15 kilometers you have covered. Now you are stuck up at toll. How should the graph look like? Yes, the graph should be same. No, yeah, graph is same. You never covered more time. After that again we started going. फिर आगे जाके ट्रैफिक जैम. अभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Are you understanding? This was easy to understand. Let's now understand this concept. So we say if this delta s is equal to 0, velocity becomes equals to 0. What is delta s? Delta s is s2 minus s1 divided by delta t. Final displacement minus initial. सर हम तो 2 घंटे से वही है जहां थे, हमारा फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ. Delta S 0 means what? S2 minus S1 is 0. If S2 minus S1 is 0, then S2 must be equal to S1. A minus B is equal to 0. That means A should be equal to B. Mathematics has to improve now. Two quantities, if their difference is 0, that means the two quantities are equal to each other. As simple as that. Do you agree? Have you understood this? Now come to the tougher part. Acceleration is said as delta V over delta t. Delta V, change in velocity, means final velocity minus initial velocity over a time. When will the acceleration be 0? When time can never be 0. Time को आप रोक ही नहीं सकते. Can you stop time? No, we cannot stop time. Time can never be 0 in physics. Time is the only thing that is going away. Acceleration can be 0 only if delta V is equal to 0. Delta V equal to 0 means what? The difference between V and U is 0. That means ये चीज 0 का मतलब क्या? मैथ्स सोचो, मैथ्स. V and U are equal. इसका मजाक कैसा होगा, समझ में आ रहा है? यहां से जा रहे हो तुम एयरपोर्ट, यहां से एयरपोर्ट जा रहे हो, हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गुड. This is your residence, Pebble City, and this is airport. We are trying to analyze you between A and B, where it's a straight line path. Then obviously this will be your initial velocity. This will be your final velocity. We are saying that the difference must be equal to 0. That means whatever is the velocity here is the velocity here. Rest में नहीं है आप क्रूज में चल रहे हैं. And when you are driving on cruise, your right leg cannot be on the accelerator, na? If you see a car, accelerator बोलते हैं. You know, in car there are, if you have a manual transmission, there are 3. This is the accelerator, this is the brake, this is the clutch. And if you are automatic, then this is not there. So this particular thing you press, whenever you press this, the speed changes. That's why accelerator. U and V cannot be same. स्पीड बढ़ाओ ना, कितना धीरे धीरे जा रहा है, तो साथ साथ आप क्या करते हो, वो स्पीड बढ़ा देते हो. योर यू एंड वी आर डिफरेंट. एंड इफ यू आर गोइंग हैप्पीली, देयर इज नो यू, देयर इज नो वी, एवरीथिंग इज सेम. फील करो उस चीज को. दैट टाइम देयर इज नो एक्सेलरेशन. एंड हाउ विल आवर कांटा लुक लाइक? स्पीडोमीटर एक जगह रुका हुआ है. व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड, कांटा गोज लाइक दिस, accelerated. And when you see a goat or a cow in front of you, ये भी acceleration है, इसका नाम है deceleration, retardation. बोलते हैं ना mentally retarded, धीरा चल रहा है, ये retard है, retard हो गया गाड़ी. फिर आप क्या करते हो, ऐसे बढ़ाते हो. So in your daily journey, the speedometer in a city will always do this way. Sometimes retardation,
समटाइम्स एक्सेलरेशन, एंड व्हेन यू आर ऑन अ हाईवे बहुत जगह एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है. Acceleration zero means there is no growth in speed. Last year our business did profit at 20%. This year also we are doing this profit at 20%. Did we grow? No, we did not grow. That does not mean we have become poor. वैसे ही हैं हम लोग. constant. पिछले साल हमने लॉस किया था, इस साल हमने ना प्रॉफिट किया ना लॉस किया. डिड वी ग्रो? यस. नहीं तो और डूबते. माइनस से ऊपर तक आए हैं. इट्स अ ग्रोथ कर्व. शुड वी इन्वेस्ट इन दैट कंपनी? डेफिनेटली. द कंपनी इज ग्रोइंग. अगले साल इट में शो प्रॉफिट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब एक्सेलरेशन को समझते हैं. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सेम डायग्राम. लेट अस सी हाउ टू इंटरप्रेट एक्सेलरेशन नाउ. और इसी से आप क्लियर हो जाओगे. ओके, एक्सेलरेशन. दिस इज 080000. This is 080001. This is 080002. I say that my acceleration is what? Rate of change of velocity, means velocity over time. Velocity over time. जरा सोचो, velocity का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. दिस इज अगेन ओवर टाइम. मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड. So what? नहीं, velocity by time. Velocity was displacement over time. Acceleration is velocity over time. मतलब मीटर पर सेकेंड ओवर सेकेंड. So this becomes मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है? Now I'll give you a value. Acceleration is 1 meter per second square. How to understand it? 1 meter per second per second. अब वेलोसिटी बढ़ेगा. 1 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी हर सेकेंड में बढ़ेगा. ठीक है, चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी द डेटा. एट 0800 our speed was 25 meters per second. What do you think your speed should be at this value? सोचो. What is the rate of increase? 1 meter per second for every second. How much time elapsed from here to here? 1 second. Velocity 1 मीटर पर सेकेंड और बढ़ जाना चाहिए. 26 मीटर्स पर सेकेंड हो जाना चाहिए. यहां पे वेलोसिटी कितना होगा? जो यहां था और 1 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड बढ़ना शुरू हो गया. 27 मीटर्स पर सेकेंड. वन में फर्क समझ में नहीं आ रहा है. अब हम इसको बढ़ा लेते हैं. जैसे नया बाइक का आ रहा था ना, 0 to 8 seconds विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9 मीटर्स पर सेकेंड. अब जरा 16 मीटर्स पर सेकेंड का एक्सेलरेशन देते हैं. देखो, we started with 10 meters per second. Now our acceleration is, say, suppose 16. Next second our speed should be 26 meters per second. Next second our speed should be 42 meters per second. Are you understanding how this है? इसको भी वॉइस पे लेने से वो ऐसे जाएगा, जेट इंजन की तरह जा रहा है आपका. You feel that? इसीलिए आवाज कर रहा हूं. अगर एक्सेलरेशन सेम रहता तो बाइक में ऐसा रहता. बाइक वुड बी लाइक दिस, जस्ट ऐसे. और ये क्या है? ऐसे ले दिया आपको पूरा जूम. अब एक कॉमन क्वेश्चन. हमारे पास एक हाईवे में एक बार पूछा था शायद आप ही लोगों से. वी हैव गॉट, से सपोज एयरबस A320, you have a Yamaha. I had asked you, and you have a BMW. एक साथ रेस शुरू होने से सबसे पहले कौन भागेगा पता है? यामाहा. Yamaha's acceleration is very fast. However, its maximum speed is limited. Yes. And suppose the runway is very long. After that भागेगा BMW. कुछ देर जाने के बाद Yamaha will not be able to accelerate further. तब ये क्या करेगा? इसमें जान है, ये Yamaha को पीछे छोड़ देगा. और जब ये रफ्तार पकड़ेगा, ये BMW को भी पीछे छोड़ देगा.
People generally say this one will lead the race. No, the Yamaha will lead the race first. Yamaha's acceleration is very quick. That's the difference between an assault rifle and a sniper's rifle. And an assault rifle is for fast warfare. फायरिंग करेगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगा. वैसे जो स्नाइपर का टाइमिंग लेगा, लेकिन इधर है तो इधर ही शॉट लेगा. इसलिए उड़ी में बोलते हैं ना, सामने असॉल्ट, पीछे स्नाइपर्स. असॉल्ट इज फॉर क्विक. यू कैन टेक ए स्नाइपर्स राइफल एंड गो फॉर असॉल्ट. आप लोड करते करते आपको उड़ा देगा. तो AK-47 इज एन असॉल्ट राइफल. ना फायर करेगा आपको. तो उसका एक्सेलरेशन फास्ट है, रीलोडिंग इज वेरी फास्ट. Have you understood the difference here? This is acceleration. That is when the airport says, cabin crew on your doors, at your seat, ready for takeoff. रुक के जब it's just accelerates ना, that's acceleration. Do you feel how the flight takes? And then goes up. And then when the flight is airborne and becomes steady, and the captain switches it off, that time its speed is something around 770 kilometers per hour. Now we are on constant speed. Till we reach point of descent. When again the speed will be lowered down. तभी तो एयरक्राफ्ट सीधा जा रहा है. नो टर्बुलेंस, नथिंग. लाइक टू हैव सम फ्रेश मील. कटक कटक घूम रहा है सब लोग, कोई इशू नहीं होता है. टेक ऑफ के टाइम पे वो कर सकते हैं आप. There are so many apps available. If you love science, you should do these. There are speedometer apps available. Download those on your smartphone. Next time when you are flying, once you connect it to the GPS, after that, even if you switch off your mobile connection that is active, you can actually see the speed of the aircraft. You know at what speed Indigo takes off? 298 में Indigo becomes airborne. मैं तो इस एज में भी ये सब खुराफाती करता हूँ. 298, 299 होते प्लेन ऐसा हो जाता है. टेक ऑफ मीन्स अगर हम हमारी गाड़ी को इस स्पीड में भगाएंगे तो गाड़ी भी उड़ जाएगा. And then at a higher born, you'll see the speed of Indigo will be around at 700, 770. So have you understood basics? Maths हम और बात करेंगे, पहले ये सब समझना जरूरी है. अभी भी acceleration खत्म नहीं हुआ. It's just an introduction. But at this class, I would expect you should be thorough with what is displacement, what is distance, what is speed, what is uniform speed, what is average speed, what is velocity. I have not taught you average velocity. What is initial velocity, what is final, and brief idea about acceleration. एक बार ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा ना, आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे. और चैप्टर का नाम अभी भी चेंज करना बाकी है. वी जस्ट चेंज इट टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. थोड़ा और करेंगे इसको चेंज, आगे बाकी. ठीक है, चलिए. इससे ज्यादा पढ़ाने से दिमाग खराब हो जाएगा.